Hello achievers, myself Pravat Behera, your chemistry teacher. Today we are going to discuss one of the topic from first chapter, that is laws of chemical combination. Okay, laws of chemical combination. So what are the topics to be covered under laws of chemical combination? Before going to that, I am discuss kariba what is exactly chemical combination. What is exactly chemical combination? In order to understand the composition of compound, it is necessary to have a theory which accounts both the qualitative and quantitative observations. Qualitative and quantitative observations of chemical changes, observation of chemical reactions were most significant in the development of satisfactory theory of the nature of matter. So matter related हम जहाँ भी theory करिवा, so we have to observe that. Then these observations of chemical reactions are summarized in certain statements known as laws of chemical combination. बुझी पारलो? So this is what the meaning of laws of chemical combination. आमे chemical combination कौन पे करूचे? Now come to the next one, that is what are the types of chemical combinations. So first, law of conservation of mass, then law of constant or definite proportion, then law of multiple proportion, Gay-Lussac's law of combining volume. So तुम्हारा NCERT syllabus रे और तुम्हारा board syllabus रे ये चार्टा अच्छी, but law of reciprocal proportion जोड़ा मैं last one discuss करीबा, that is excluded the NCERT, but को competitive exam रे पचार दे परे. So in order to discuss that, I have kept that in mind. In worst case, it might have been asked in any competitive exam. ताको हमें सेट में include करी जाए. बुझा पड़ला? So these are the 5 laws of chemical combination. और एटा तो मोर class 9th रे भी अच्छी, लाइट तो detail नहीं, but 9th रे भी किछि अच्छी. So class 9 student भी आपको refer करी परे वीडियो को. Okay? So the first one, that is law of conservation of mass. So कौन कहूँ ना तुम जेन जानचो, mass can neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one form to another form. ता माने गोटे फॉर्म रु आ गोटे फॉर्म को कन्वर्ट हबो. जदि आमे कन्वर्ट हबो ताल मास कोन रहइबो? कांस्टेंट रहइबो. So in other words, you can say sum of the mass of the reactants must be equal to sum of the mass of the product. Sum of the mass of the reactants must be equal to sum of the mass of the product. So law of conservation of mass को प्रूव करिया पई हमें एनी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करा जाए. जदि पचार जाए व्हाई we should balance the chemical reaction, na in order to justify the law of conservation of mass. Okay, so it is mass can neither be created nor be destroyed, it can only be converted from one form to another form. For any chemical change, total mass of active reactant are always equal to the mass of the products formed. So what is the meaning of active reactant? Suppose आमे 10 ग्राम reactant नौचे, सो किसी जरूरी नुहे जे 10 ग्राम रिएक्टेंट टू 10 ग्राम ही रिएक्ट करी जिवे. 10 ग्राम रु हेई पारे 5 ग्राम रिएक्ट करिवो कि 2 ग्राम रिएक्ट करिवो. सो जेति की मास रिएक्ट करिवो दैट इज नोन एज द एक्टिव रिएक्टेंट. ताले हम कोन लिखिबा ना टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट. सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कोन हबो ना जेति की प्रोडक्ट रे कन्वर्ट हे जाईची प्लस जेति की तमर कोन रहला अनरिएक्टेड रिएक्टेंट रहला. ओके, सो जो एक्टिव मास एटा प्रोडक्ट रे कन्वर्ट हे जाईची आ जो बाकी रिमेनिंग कोन रहबो अनरिएक्टेड. So total mass of the reactant equal to total mass of the products plus mass of on-reactive reactants. Okay, so it is clear. Now in the next page, it is a simple example. 3 gram of ethane. So what is the formula of ethane? That is C2H6. 3 gram of ethane gave 5.4 gram of H2O and 8.8 gram of CO2 on complete combustion. जदि आम इथेन को combustion करिवा ताले कौन बनिवो ना 2 molecules of CO2 and 3 molecules of water. So oxygen केते हबो ना that is 7/2 molecules of oxygen. बुझा पड़ले. दिस इज कंप्लीट balanced reaction.
जदि मास देछि जेतिकी डाटा हम पाखे अछि कोन देछि इथेन कंबशन हैला परे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हेछि तमने रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट सो व्हिच लॉ इट इज टू बी followed so this is law of conservation of mass so that is the first one that is last one option D law of conservation of mass okay so बुझा पड़ला so हमको देखियार अछि law of conservation of mass रे reactant रो mass equal to product रो mass or sum of the mass of the reactants must be equal to sum of the mass of the products so now come to the next one that is the law of constant or definite proportion सो एथिरे कौन कहूँ ना व्हाट एवर मे बी द सोर्स तो जो भी सोर्स रु ऑब्टेन कर कंपाउंड को व्हाट एवर मे बी द सोर्स द सेम कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास ओके तो सेम कंपाउंड कंटेन्स ऑलवेज द सेम एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास सपोज आमको कौन करियार अछि कार्बन डाइऑक्साइड सपोज कलेक्ट करियार अछि आमे कार्बन डाइऑक्साइड कोड कलेक्ट करिवो को आमे रेस्पिरेशन रु कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करि परिबा बाय बर्निंग द कंपाउंड ऑफ कार्बन बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट वी कैन गेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड सो आमे जो भी सोर्स रु कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करूचे सब आमे कोन देखिबा ना कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन एंड 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन तो आमे सिंपल रेशियो देखिबा सो इट इज 3:8 इट इज ऑलवेज 3:8 बुझा पड़ला क्लियर so this is for the carbon dioxide similarly we can take one more example we can collect water from different sources water हम कोड collect करिवा ना water can be collected from river sea ocean tap or any other place it may be lake also so then water को analysis करिवा it has been found that always water contains 2 parts by mass of hydrogen and 16 parts by mass of oxygen so it is 1:8 ता माने आमे एनालिसिस करिवा मास रेशियो नबा मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन सबले कोन हबो 2:16 और 1:8 ताले जदि एतिकी रेशियो आसीबो सो दिस इज इन एग्रीमेंट विथ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्लियर स्टूडेंट्स सो नेक्स्ट आमे एठी ओटे एग्जांपल डिस्कस करिवा if water samples are taken from sea river जोटा में भी डिस्कस करें cloud lake or any they will be found to contain hydrogen and oxygen in the approximate ratio of 1:8 so which law is this so it is law of definite proportion so this is one of the simple question now we can go to next another example common salt was obtained from two different sources common salt फर्स्ट सोर्स कौन है ना सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन सो इन दिस सॉल्ट क्लोरीन केते अछि द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इक्वल टू 60.75% सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सोडियम कारण इट कंटेन्स ओनली सोडियम एंड क्लोरीन सो परसेंटेज ऑफ सोडियम केते हबो दिस इज 39.25% ओके इन अनदर सैंपल 1.944 ग्राम ऑफ क्लोरीन ताले क्लोरीन केते हला 1.944 ग्राम ऑफ क्लोरीन was present in 3.2 gram of the common salt so what is the sodium now so that is 3.2 minus 1.944 gram okay so you can subtract it तापरे कोन कहिछि illustrate the law of constant composition from the above data ताले एठी हम देखिबा जदी फर्स्ट डाटा रे ऑलरेडी कोन देछि ना परसेंटेज देछि सोडियम एंड क्लोरीन रो सेकेंड रे परसेंटेज देइनी जदि हम सेकेंड मास देछि से मास रु आमे जदि कोन करबा ना कैलकुलेट करबा परसेंटेज ऑफ सोडियम और क्लोरीन केते अछि राइट आमे जदि परसेंटेज ऑफ सोडियम और क्लोरीन रो कैलकुलेट करबा देन कोन हबो ना जदि इक्वल आसीबो फ्रॉम बोथ द सोर्सेस सोर्स 1 एंड सोर्स 2 देन इट मस्ट बी इन एग्रीमेंट विथ द लॉ ऑफ डेफिनाइट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन ताले क्वेट स्टूडेंट एठी हमर कोन अछि क्लोरीन अछि 1.944 and what is the mass of the compound that is 3.2 जदि हमें ताको केते मल्टीप्लाई करिवा ना 100 मल्टीप्लाई करिया परसेंटेज ओके सो परसेंटेज केते होबो ना परसेंटेज ऑफ क्लोरीन that is mass of chlorine divided by mass of the salt into 100 so it is coming
60.75%. तुम भी निजे कैलकुलेट कर देख पार यदि परसेंटेज ऑफ क्लोरीन है 60.75%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ सोडियम सेम 39.25. ताले since the percentage of sodium and chlorine in the common salt are same from both the sources, ताले हम तो कौन कहेगा it is in agreement with law of constant or definite proportion. Okay students, now come to the next one. Next is law of multiple proportion. So what is law of multiple proportion? Now कौन लगुचे multiple, that means it is going to make multiple number of compounds. So when two elements combine to form two or more than two compounds, then fixed mass of the element, if you are going to take the ratio of different mass of the element with respect to the fixed mass of other element, then it must show the simple ratio. कौन लिखा है जी? Then the different masses of one element which combines with fixed mass of the other element bear a simple ratio to one another. आप गोटे एग्जांपल नबा. एग्जांपल कौन ना? वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग विथ ईच अदर, देन दे कैन फॉर्म द कंपाउंड नाइट्रिक ऑक्साइड, दे कैन फॉर्म द कंपाउंड N2O nitrous oxide, they can form the compound NO2 nitrogen dioxide, they can form the compound N2O3 dinitrogen trioxide or nitrogen sesquioxide or N2O5. Okay students, so nitrogen and oxygen are combining to form NO, N2O, NO2, N2O3 and N2O5. These are the 5 compounds, right? So आम ये कौन कहले ना आम रेशियो कहार रेशियो नवा ना डिफरेंट मास ऑफ द एलिमेंट नवा, माने जो एलिमेंट मास डिफरेंट अच्छे तार रेशियो नवा विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट. बट आम ये देखिए कहार तो मास फिक्स नहीं, ताले आमको गोटे एलिमेंट मास को फिक्स रखा पड़ो. कहार मास को हम फिक्स रखा ना जहाँ मास को इजी हम फिक्स रखापी. ताले ये देख जहाँ आम पाखे डाटा देती, सो ये डाटा कहार मास को आम इजिली फिक्स कर ना नाइट्रोजन को. सो नाइट्रोजन 3 कंपाउंड 2 अच्छी, बाकी 2 कंपाउंड 1 अच्छी. ताले जो 1 अच्छी आम कौन कर ना यू कैन राइट इट N2O2 and N2O4, right? So now the mass of nitrogen in all the 5 compounds are the same. ताले different mass of oxygen नवा. Oxygen different mass नेले 32 is to केते रहिला 16 is to 64 is to 48 is to 80. So it is 2 is to 1 is to 4 is to 3 is to 5. Is it a simple ratio? Yes, it is the simple ratio. Generally simple ratio में कहा कौचे 1 रू 5 भीतर रहले ताको simple ratio कौचे. So it is already coming in between 1 and 5. तामें कौन कहिबा ना this example illustrates the law of multiple proportion. तामें law of multiple proportion क्वेश्चन आसले केमती अप्रोच करिवो ना देखिवो सेठी जहाँ भी ओनली 2 एलिमेंट देथिवो 2 एलिमेंट मल्टीपल नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाउथिबे. सो जो भी कंपाउंड बनुथिबे सो कंपाउंड रे गोटे एलिमेंट रो मास को हम फिक्स रखियार अछि. सपोज कहार मास फिक्स नाही त से केस रे कोन करिवो ना गोटे एलिमेंट रो मास को 1 नै कि प्रोजेक्ट करि देबो. सो x ग्राम कंबाइन्स विथ y ग्राम, 1 ग्राम कंबाइन्स विथ y by x ग्राम, p ग्राम कंबाइन्स विथ q ग्राम, 1 ग्राम कंबाइन्स विथ q by p ग्राम. ताले गोटे एलिमेंट मास 1 हे गेला. बाकी जो डिफरेंट मास रहा अदर एलिमेंट तार रेशियो नहीं देख से सिंपल रेशियो जब आसो देन इट इज इन एग्रीमेंट विथ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. गॉट इट? ओके. नाउ स्टूडेंट वी आर स्लोली मूविंग टू द अदर क्वेश्चन. सिंपल एग्जांपल इटा में नहीं वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इलस्ट्रेट द एग्जांपल ऑफ ओके इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर H2O and hydrogen peroxide H2O2. Tell ko which mass is constant? Mass of hydrogen is constant. So what is the ratio of different mass of oxygen? 16 is to 32. That is 1 is to 2. Is it the simple ratio? Yes, it is the simple ratio. That means it is in agreement with law of multiple proportion. Next, in SO2 and SO3, the ratio of weight of oxygen which combines with a fixed ratio or fixed mass of sulfur. This is the example of.
ताले एठी कोन देखो सल्फर मास कांस्टेंट अछि ऑक्सीजन मास डिफरेंट अछि केते अछि 32:48 इज इट 2:3 yes it is 2:3 that means the mass of one element is fixed the ratio of mass of different mass of the element is 2:3 so it is in agreement with law of multiple proportion okay next so now we are slowly moving to the next one that is Gay-Lussac's law of combining volume so example le तुम गोटे जिंस मार्क करिया पड़ियो गोटे जिंस केयरफुल देखिया पड़ियो all the reactants and products must be present in the gaseous form जदि reactant product gaseous form में नाहंती then we cannot use Gay-Lussac's law of combining volume so all reactants and products must be present in the gaseous form and we have to take the fixed value of temperature and pressure that means at constant temperature and pressure okay pressure the volume of all gaseous reactants and products the volume of all gaseous reactants and products bear a simple whole number ratio to each other bear a simple whole number ratio to each other suppose we are taking one gaseous reaction H2 gas plus I2 gas gives rise to 2HI gas okay all are gaseous reactants and products and at constant temperature and pressure tale ame the ratio naba it is 1:1:2 ratio of volume of the gaseous reactants and products it is 1:1:2 is it the simple ratio yes it is the simple ratio since it is a simple ratio it is in agreement with law of that is Gay-Lussac's law of combining volume clear okay so we can discuss one more example it is given that in the reaction N2 plus 3H2 gives us 2NH3 the ratio of volume of nitrogen hydrogen and ammonia is 1:3:2 so nitrogen hydrogen ammonia so it is clearly given in the equation so these figures illustrate the law of Gay-Lussac's law of combining volume okay ताले आम जदि किछि कोन देइथिबो gaseous reaction देइथिबो so जदि ताकर वॉल्यूम सिंपल रेशियो आसीथिबो it is in agreement with Gay-Lussac's law of combining volume now the last one although this is not there in your NCERT or school syllabus but it is useful for different competitive exam so that is law of reciprocal proportion so एपन आमे जो देखिले first law of conservation mass रे mass of reactant equal to mass of product तादरे एलिमेंट रो कंपोजिशन के सहित किछि लेना देना नाही तब नेक्स्ट टाइम कौन देखिले लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन सो डेफिनाइट प्रोपोर्शन मल्टीपल प्रोपोर्शन ओनली 2 एलिमेंट्स आर टेकन ओके ओनली 2 एलिमेंट्स आर टेकन बट आम देखिए रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन रे हियर वी हैव टू टेक 3 एलिमेंट्स सो जदि जो भी किसी क्वेश्चन देइथिबो अप्रोच करिया पे कहि दउची जदि कोई भी किसी क्वेश्चन देइथिबो जदि 3टा एलिमेंट देइथिबो ताले सेठी हमें इमीडिएटली हम माइंड का आसीया दरकार it might be the law of reciprocal proportion it might be the law of reciprocal proportion clear okay so reciprocal proportion कौन कहूची ना if two elements B and C हम अलग अलग दुटा एलिमेंट नेले B and C react with the same mass of the third element A so B and C react करछंती A सहित आ A रो mass constant रहया दरकार the ratio in which they do so माने A रो constant mass बी रिएक्ट करछि ए रो कांस्टेंट मास सी रिएक्ट करूछि सो जो रेशियो रे से माने रिएक्ट करूछंती इट विल बी द सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ द कंपाउंड बाय व्हिच बी एंड सी आर कंबाइनिंग विथ ईच अदर माने ए बी से कंबाइन कला ए सी से कंबाइन कला सो बी और सी भीतर यदि कंबाइन करिवे ताले से जो मास आसी से जो रेशियो आसीबो ताका मास जो रेशियो आसीबो सो प्रीवियस रेशियो से भली से एका हितो दरकार और तार सिंपल मल्टीपल हितो दरकार फॉर एग्जांपल प्रीवियस रेशियो आस्ती 1:1 सो एठे कोन आसबो 1:2 हे पारे 1:3 हे पारे और 1:4 हे पारे सो इधर सेम हबो 1:1 हबो और तार गोटे कोन हबो मल्टीपल हे पारे फॉर एग्जांपल तीनटा एलिमेंट सपोज हमें नौचे कार्बन ऑक्सीजन एंड सल्फर ओके सो लेट्स से कार्बन रो मास को हमें कांस्टेंट नौचे सो कार्बन कंबाइन्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 कार्बन कंबाइन्स विथ सल्फर टू फॉर्म CH2 ताले एठी देखो दीटार कोन रहिला मास ऑफ कार्बन कांस्टेंट रहिला जदि ऑक्सीजन और सल्फर
जदि कंबाइन करेंगे ताल कौन बन SO2 बन ओके ताले ये देख ये रहा कौन ना मास ऑफ द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर दैट इज S2 32 into 2 is to this is 2 into 16 so it is coming 2:1 ताले ये SO2 जो देखिबा it is 32 is to 32 so what is the relationship between these two it is simple multiple बुझी पारलो it is simple multiple ताले हम कौन देखिले ना सेम मास कार्बन रो कंबाइन कला ऑक्सीजन सहित एंड सल्फर सहित so it makes CO2 and CS2 so ये CO2 CS2 बनिला कार्बन मास कांस्टेंट अच्छी so आम कौन ने ना मास रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर so it is coming 2:1 जो सल्फर ऑक्सीजन कंबाइन करुछंती so those are making the compound SO2 so ये 2:1 थिला तो मास ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इन SO2 इज 1:1 so आंक विद रिलेशन कौन सिंपल मल्टीपल बुझी पारला आंक विद रिलेशन कौन ना सिंपल मल्टीपल आई होप रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बुझा पड़ला ना कम टू द नेक्स्ट वन गोटे एग्जांपल आम गोटे एग्जांपल देखा ये कौन देछि ना वन पार्ट ऑफ एलिमेंट ए आम एलिमेंट ए नेले सो दैट इज वन पार्ट कंबाइन्स विथ टू पार्ट्स ऑफ बी सो बी equal to 2 parts okay so let it be x and this is 2x 6 parts of element C combines with 4 parts of element B so another देछि देखो हमें B is to A that is coming 2:1 B is to C that is coming 4:6 that is 2:3 आसिला 2:3 ताले हमें B is to A कौन थिला 2:1 B is to C कौन है ना 2:3 ताले कौन रहा B रो मास कांस्टेंट रह गला 2 रह गला ताले आमे जदि एठी रेशियो नबा का रेशियो नबा ना मास ऑफ A एंड C सो इट इज कमिंग 1:3 कार मास ऑफ A एंड C इट इज कमिंग 1:3 इज इट द सिंपल रेशियो फर्स्ट कौन थिला 1:1 एबे कौन रहिला 1:3 इट इज द सिंपल मल्टीपल सो आई होप इट इज क्लियर स्टूडेंट बुझा पड़ी ताले आ गोटे लास्ट एग्जांपल नबा लास्ट एग्जांपल नेला परे वी आर गोइंग टू वाइंड अप द क्लास फॉर टुडे ओके नाउ गोइंग टू द लास्ट पेज फॉर टुडेस लेक्चर एटी गोटे क्वेश्चन देछि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन्स विथ 15.88 ग्राम ऑफ सल्फर ओके सो एटी कोन देछि हाइड्रोजन 1 ग्राम सल्फर दिस इज 15.88 gram. It is the first data. 1 gram hydrogen combines with again this is 1 and second 1 gram hydrogen combines with oxygen 7.92 gram. Oxygen is 7.92 gram. Okay. ताले ये देखो हाइड्रोजन मास कांस्टेंट हो गला so what is the ratio of mass of sulfur and oxygen it is 15.88 by 7.92 so it is approximately 2:1 देख परिबो it is approximately 2:1 तापर नेक्स्ट कोन कहि छी 1 gram of sulfur combines with 0.998 gram of oxygen ताले सल्फर एबे कोन हला हाइड्रोजन मास कांस्टेंट अछि सल्फर आउ ऑक्सीजन मास रेशियो नेले 2:1 राइट नेक्स्ट कौन कही ना इधर 1 ग्राम सल्फर कंबाइन्स विथ 0.998 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ताले हम एठी देखिबा सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सल्फर टू मास ऑफ ऑक्सीजन 1/0.998 सो इट इज कमिंग 1:1 सो एठी कोन थिला 2:1 एबे कोन आसिला 1:1 Is it the simple multiple? Yes, it is the simple multiple. So that means it explains the law of reciprocal proportion. Okay students, so आज क्विकली आम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को डिस्कस कले जोटा कि तुम क्लास 11 सिलेबस रे आसीबो और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसिले जेति आम सब कॉन्सेप्ट रो किछि क्वेश्चन डिस्कस कले आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू आउ स्टूडेंट जो माने 9th क्लास रे भी अछंती तुम मैंने यहाँ डिस्कस कर तुम वीडियो को रेफर कर तुम ओनली कौन अच्छी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास एंड लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन मल्टीपल प्रोपोर्शन तुम ना बट
जमती स्टूडेंट एबे फाउंडेशन कोर्स रे 11 12 रो किछि किछि बेसिक पढ़ी दउहंदी सो इट इज आल्सो एडवाइजेबल टू द क्लास 9 स्टूडेंट्स यू कैन आल्सो रेफर दिस वीडियो ओके स्टूडेंट्स सो आज पर्यटन तुम किसी वीडियो को देखुच आ लाइक भी करुच आ किसी कमेंट भी दौच आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू आ स्टूडेंट मैं तुम मानक एनकरेज करी जदि तुमको वीडियो भल लगुच आ तुम यूजफुल होची ताले किसी ना किसी कमेंट दियो आ जदि तुम चाहूच किसी इम्प्रूवमेंट कि क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड करने सो डेफिनेटली किसी ना किसी तुम कमेंट दियो ओके स्टूडेंट्स वेरी ऑल द बेस्ट।